Yes, I think there's a mic issue. Hello and a very warm welcome to all our viewers. My name is Karan Bali. You are watching the CricketNext YouTube channel. India versus New Zealand second Test match, day one in the city of Pune, and what a splendid performance by the man who was brought in just at the last minute. And we were wondering for the last few days, why is Washington Sundar in the squad? If he's in the squad, will he get to play or not? उनको खेलने को भी मिला, and the performance that he put up today in front of the Pune crowd, it is something that will be talked about for a long time because it's a match winning. It could be a match winning goal, but impactful performance Sundar की तरफ से. Well, to talk more about day one of the match, I have with me Vineet Ramakrishnan, Taus Rizvi, and Animesh Nath, and we'll discuss क्या क्या हुआ आज day one पुणे में. Hi Vineet, hi Taus. There's so much to talk about. Hi Animesh. बहुत कुछ है बात करने को, but Vineet, we'll have to start with the man of the moment, Washington Sundar. We were here only. We were discussing just a few days back, a day or two back. Why is Washington Sundar here? ये डा विंसी कोड है, ये सॉल्व करने की जरूरत है कि क्यों लाया गया है उनको. जब ऑलरेडी आपके पास चार स्पिनर है और आए हैं तो क्या खेलेंगे तो क्या इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देंगे. बट व्हाट ही डिड टुडे वाज रियली इंस्पायरिंग. अ सुंदर कमबैक, as you can see on your screen. Your thoughts on Washington Sundar and his performance today? Nit, you're on mute, I guess. Yeah, fantastic comeback for Sundar, and whatever plans Gambhir had for him, I think that paid rich dividends. And the way that he bowled was absolutely fantastic. I mean, you were the one who were mentioning when we were watching the game that he made Ashwin look mediocre, and that's quite a big, statement to be made when you're playing a Test match after such a long time, being drafted into the squad as a very late call, and coming up with what 7 wickets is just fantastic. And what we thought of how New Zealand started their innings after winning the toss was also putting India under a bit of pressure in the first session. But once Sundar got into his mode and got into his momentum, I mean, it was lovely to see how he was bowling. I mean, he was quicker through the air, but yet he was able to get those revolutions on his deliveries, and whatever he did after the ball pitched was just fantastic. And again, the lines that he bowled, he was able to judge that pitch really well. The kind of length that he was bowling and the lines that he maintained was just fantastic. Somebody like a Devin Conway and of course Rachin Ravindra, they played really well. Ashwin got them out, and once that middle order opened up, Sundar just gobbled up them like anything. Yeah, no, absolutely. The way he bowled, and as I said, he made Ashwin look mediocre. But Taus, I'd like to bring you in. You're looking really cool with the shades on. Your thought on Washington Sundar's bowling today, the kind of performance that he put in, or एक होता है कि okay, you came in, you bowled well, but to take 7 wickets out of 10, and helping your team bundle the opponents out at a decent score. I won't say a low score, at a decent score. और हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सुंदर एंड हिज परफॉर्मेंस टुडे? आई थिंक यहाँ से शुरू होता है जहाँ पर हम जैसे आम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से गौतम गंभीर जैसे लोगों की सोच शुरू होती है. एंड दैट इज हाउ आई थिंक इट स्टार्टेड. अ लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चनड गौतम गंभीर डिसीजन और मे बी द टीम मैनेजमेंट डिसीजन कि यार what is Washington Sundar doing over there? I mean, is he there to bowl in the nets? Me and Vineet has said, apart from that, will he bat at number 3? That was the discussion more than anything else. उसकी bowling के बारे में discuss ही नहीं किया था, because I mean, there were not many much impressive figures when it comes to his bowling, like today, like how he bowled today. So there were not many wickets, I would say, yeah, that inspired many people to actually consider him or ask him to be in the reckoning of that squad and drop a bowler like Kuldeep Yadav. So surprise to her, and you know what worked? Again, I agree with Vinny. What worked? It was the line. It was the flatter trajectory. It was the deception. Like आपको पता है जडेजा क्यों सक्सेसफुल है? It's because of his trajectory, because of his unpredictable turn, and the ball that comes in drifts in. That is one of the reasons why Washington's Jadeja has been successful, and that is the reason why this guy, he's come handy against left spinners, against left-handers as well as righties, because people might have expected, the batters might have expected the ball would turn normally, and Kuldeep comes in and bowls. He would bowl at a decent flight where the ball will take much time in the air, and they would
they might go on the back foot and they'll have the time to be on the front foot. The best part was that they took batting on the first day. For them, they did not thought कि यार, they did not think कि यार Washington Sundar would come so good, come with that flatter trajectory, come with that pace, and suddenly fool them, deceive them with pace and variation. He doesn't have a regular दूसरा or maybe the तीसरा. या उसके पास angles है. The angles that he generates ना, which deceives the batsman, and that is the beauty of Washington Sundar. और बहुत कम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इजी रहेगा वॉशिंगटन सुंदर को खेलना, क्योंकि ग्रास रहती है विकेट पे, so it doesn't turn much, but where the ball turns a bit, where there are chances कि यार जहां पर बॉल टर्न होगा बैट्समैन को लगेगा, वहां पर बॉल अगर टर्न नहीं हुआ, दैट इज वेयर वॉशिंगटन सुंदर कम्स इन, और वहां पर डिसीव करते हैं वॉशिंगटन सुंदर और 7 विकेट लेके जाते हैं. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई, एंड फ्रॉम द अदर एंड, आई मीन, यू सेड दैट Ashwin looked mediocre while this guy looked dangerous. Different reasons, different wickets, different conditions, different situations. अश्विन, आप देखेंगे अश्विन मोस्टली बॉल एयर करके या अवे गोइंग डिलीवरीज में या स्टंप से बाहर जाके विकेट्स निकाले, या एक फॉल शॉट खेलने गए तो लेग स्टंप पे विकेट गए. इन्होंने स्टंप टू स्टंप रखा बॉल, यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया बैटर्स को. यहाँ पर इन्होंने आपको फॉल शॉट या रॉन्ग शॉट खेलने का अपॉर्चुनिटी, जहां पर आपने रॉन्ग शॉट खेला वहां पर आप मिस किए, वहां पर आप लेग बिफोर हुए या तो बोल्ड हुए, एंड दैट इज व्हाट वर्कड फॉर वॉशिंगटन सुंदर. And at the end of the day, I think it's a beautiful move, yeah, beautiful, and which will give Team India a lot of confidence going from this match to the next game to Australia, and that is where he's going to be crucial. Maybe he will be ahead. He will be counted ahead of Kuldeep's, the Ashwin, and the Jadejas because of his obviously the unpredictable, the drift, the off spin, as well as his batting. So you never know. This might change his career completely. Yeah, but this is actually a very interesting take, and I think we were off the camera. We were discussing, me and Vineet, about Washington Sundar's future in the BJT, because he is someone who can bowl well. But will he be preferred ahead of Ashwin? This is something we'll have to wait and see. Obviously, as of now, let's focus on the India versus New Zealand game. Animesh, I'd like to bring you in here. What makes Washington Sundar successful is not kind of a bowler who has a lot of variations like रविचंद्रन अश्विन. ऐसा कोई वो शार्प वो भी नहीं है कि माइंड भी नहीं, स्किल्स भी, इन द सेंस बॉलिंग जो अश्विन का जो बॉलिंग में माइंड है शार्प, वैसा हम यूजुअली वी डोंट कंसीडर सुंदर एज दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉलर. बट कमिंग हियर, इट्स नॉट दैट कि पिच में बहुत ज्यादा डीमंस है जो हेल्प कर रही है वॉशिंगटन सुंदर को स्पिन करने में. इतनी स्पिन भी नहीं हुई, बहुत हल्की सी भी स्पिन हुई, लेकिन वो बैटर्स को बहुत परेशान की. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट मेक्स वॉशिंगटन सुंदर रियली सक्सेसफुल एज अ बॉलर? बिल्कुल, अगर आज की बॉलिंग देखी जाए तो वो जो रणजी में कर रहे थे उसी चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया, और ये चीज़ कहीं ना कहीं वॉशिंगटन के लिए काम की. और सबसे बड़ी बात, जो एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर की बॉल होती है, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने रचिन रविंद्र का विकेट लिया था, जिस तरह से टॉम लंडन को बोल्ड किया, और उसी तरीके से सेम तरीके से उन्होंने टिम साउदी और अजाज पटेल को बोल्ड किया. तो वो लगभग तीनों गेंदें लगभग सिमिलर थी, कि वो एक ही जगह पे वो टप्पा खिलाना चाह रहे थे, और वहां से वो गेंद जिस तरह से विकेट की ओर जा रही थी, उस तरीके में कहीं ना कहीं वो जो डिफेंस कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड बैटर्स का था वहां पे फेल होता वो दिखा. और कोई बहुत अलग चीजें नहीं थी, बस लाइन लेंथ और वेरिएशन तो इतना नहीं कहूंगा, लेकिन जो चीज उनके लिए काम कर रही थी, वॉशिंगटन सुंदर उन्हीं गेंद के साथ स्टिक करते रहे. वो प्रॉपर ऑफ स्पिनर्स बॉल्स थी जो किसी भी बल्लेबाज को, मुझे नहीं लगता चाहे वो न्यूजीलैंड बैटर होते या ऑस्ट्रेलियन बैटर्स भी होते, वो भी वहां पे फेल होते, क्योंकि जिस तरीके से वो टप्पा जहां पे खिला रहे थे वहां से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैट्समैन को बीट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और उस चीज के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने स्टिक किया. और यहाँ पर मुझे लगता है रणजी में जिस तरह की फॉर्म में वो दिख रहे थे, और अपने कह सकते हैं इस समय प्राइम पे हैं, कि वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉलिंग डिपार्टमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं. बैटिंग से पहले भी वो अपना कमाल करते दिखाते हुए आए हैं, लेकिन बॉलिंग में वो खास कमाल अभी तक नहीं दिखाता, लेकिन आज वो दिखा. और कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनको लेकर बढ़ा था, और वो चीज काम की. और लेकिन मेरे हिसाब से अश्विन से तुलना नहीं करनी चाहिए. आज वॉशिंगटन सुंदर का दिन था, उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़े रखा, वो चीज उनके लिए काम की. लेकिन अश्विन आज वो मोस्ट टेस्ट विकेट्स की सूची में और ऊपर आ गए, नाथन लियोन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया. तो ये चीजें मेरे हिसाब से अश्विन जैसे लेजेंड से अभी कंपैरिजन करना खराब होगा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पर लेके आना, वो चीजें कहीं ना कहीं
अच्छी थी टीम मैनेजमेंट के लिए, वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी एक स्पेस क्रिएट होगा। मुझे लगता है ऐसे स्पिनर की ज़्यादा ज़रूरत है टीम इंडिया को, और ये डिबेट भी थी, और इस डिबेट को कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल विराम दे दिया। बिल्कुल, इंडिया के पास स्पिनिंग ऑप्शंस बहुत है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि वी ऑलरेडी हैव 4 spinners in the squad. Why to have Sundar? But we'll discuss India's bowling combination in this match. I'll now move on to the other key talking point that we need to address from this match, and that is the second point we see on our screen here. KL Rahul and Mohammad Siraj dropped. Now, Vineet, Mohammad Siraj is okay. We have been discussing a lot on Mohammad Siraj is out of form. We'll come to him. But this KL Rahul Sarfaraz debate, I think it has been answered. And yesterday we were talking about what the team management thinks. Gambhir came, he said, we are backing. Ryan Tendulkar, assistant India head coach, said that Gambhir backs him. We as a team, we are backing him. But as soon as the match started at the toss, Rohit Sharma said KL Rahul is not playing, Sarfaraz Khan is playing, Shubman Gill is in. How do you see this? Do you think the backing part in the playing 11 has stopped? Because squad में तो वो रहेंगे, but in the playing 11 India now thinks enough is enough. Yesterday as we were talking कि सरफराज को अब क्या बोल के बाहर करेंगे, तो do you think वो hit हुआ है Indian team को कि we can't put a youngster out who is scoring 150 200? If that is the thought process that एक यंगस्टर जो बिल्कुल पूरे मोमेंटम में खेल रहा है उसको आप कैसे बाहर करेंगे, and that is the reason why you dropped KL Rahul, that's fair, right? I mean, that's absolutely fair. Yes, I was the one who advocating कि आप KL Rahul के साथ आपको जाना चाहिए, persist करना चाहिए, and Sarfaraz Khan should be the one who should be left out because he came in as a replacement of Gill, so he should be the ideal one to step away when Gill comes back in. But then again, the decision, I'm very much okay with that decision to see Sarfaraz Khan retain his place in the 11. But having said that, whatever, I mean, Gautam Gambhir or Ryan Tendulkar said during the press conference, I am always of the opinion that whatever the Indian management, not just Gambhir and Ryan Tendulkar, even before that, be it the Rahul Dravid era or even before the Ravi Shastri era, they do try to make a mockery of us media guys. I mean, that's what I felt. We try to ask them some tricky questions, and they do come back to us with very random answers, and this is one of that thing. But I'm not going to read too much into it. What Gambhir would essentially have said that they'll back their players as a whole is what I felt. And what you saw in Pune is probably what they went in with their gut feeling, whatever, as Tauz had mentioned in the previous live as well, कि momentum जिसके साथ है आप उनके साथ जाना चाहेंगे. So yeah, right call. But again, yeah, Gambhir or whoever comes on the pre-match press conferences, I would not take their word as the final thing. I mean, that's something that we all, and Tauz especially, would know that you take that with a pinch of salt. No, absolutely. We have often seen, stark differences between what was being said in the press conferences and what actually happens on the field. This is not the first time this is happening. But Taus, your thoughts on this decision by the Indian team? That you need to rest KL Rahul and bring in Sarfaraz Khan. Do you think this will go on now till Sarfaraz Khan, hopefully not, goes out of form or something? Or do you think it's just a break to KL Rahul just to focus and get back in his mind? When Gautam Gambhir said that we are going to back him, it meant कि he won't be dropped from the playing from the 15 member squad. अब वो भी वो कर सकते हैं because I mean showing confidence कि यार at least you're there, you're part of the scheme. It's not that you're completely out because you'll be there in Australia. We need you in Australia. Sarfraz is needed in these kind of conditions. He's got the momentum. He's played the part well when it mattered. Horses for courses because the wicket is going to be turning. He knows exactly how to go about in the Indian conditions. Obviously, KL Rahul has been born and brought up in playing in Indian conditions, just like what Sarfraz is. But Sarfraz looked more comfortable. He is more of a street fighter, mentally stronger. Right now, looks mentally stronger. He is in the comfort zone. So Rohit Sharma would be looking for match winners rather than people who are batters or players who are low on confidence. So it's not just about KL Rahul doesn't have the class. Sarfraz has all the class of the world, and he's right now the best batsman. It's not that. It's the how the person, the character, the player is responding to the situation. What is the body language? How is he approaching the game? I mean, obviously, KL Rahul, the approach would not be negative, but then you can see
not everybody is a psychologist, not everybody is a good reader of body language, but then Yeah. at the end of the day, human beings understand exactly. You get the vibes, okay, what's going around with a certain kind of a player, whether who he's in Yeah. confidence, whether this guy is lacking Yeah. confidence, whether he will be able to. एक चीज इंस्टिंक्ट भी होती है जिसकी बात होती है जो हम रिकग्नाइज करते हैं. इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट क्यों Yeah. बोला जाता है कि यार इंस्टिंक्ट पे आप बहुत सारी चीजें या प्रेमोनेशंस भी होते हैं. तो क्रिकेट उसमें भी काम करता है, सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं. इंस्टिंक्ट होता है जिसपे आप काम करते हो, और इंस्टिंक्ट पे आप शॉट्स भी खेलते हैं. इंस्टिंक्ट पे आप टॉस जीत के बैटिंग लेते हैं या बॉलिंग लेते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन में आप वो डिसाइड करते हैं. तो वो इंस्टिंक्ट सरफराज खान के फेवर में गई यार कि यार दिस बंदा, दिस गाय लुक्स गुड इन फॉर्म. He can play the spinners well. He can sweep the bowlers. He can take on the attack right now. He knows. I mean, he may be he's playing awkwardly, unorthodoxly. This guy is playing fast bowlers decently. I mean, he's getting those jabs, getting those cuts very very unconvincingly, but he's still managing to do it. What KL Rahul has not been. I mean, despite having all the class of the world, he can easily smash Tim Saudi on the back foot to over the deep point. He has all the Hmm. class, but जो इस वक्त कंफर्टेबल सिचुएशन में पोजीशन में है, जो कॉन्फिडेंस लग रहा है, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट played key role in Sarfaraz continuing with this. Also, I mean, 150, yeah, it stays on Hmm. the head. It's still behind, yeah. When you get runs when nobody is scoring, that helps a Yeah. lot. That helps a lot when Virat is not scoring, when Rohit Sharma is getting out cheaply, when others are struggling. Only Rishabh Pant and Sarfaraz, youngsters are doing it, and while KL Rahul, a senior guy, is not being able to do it. So that works. That works for a youngster like Sarfraz. That's why team management takes these kind of decisions. Otherwise, yeah, KL Rahul is a class player. At the end of the day, I will keep on saying that. I mean, there is a huge major difference here between the two guys. No comparison. But right now, at present, this guy looks certainty in Yeah. playing 11 and can challenge the opposition attack right now. That Yeah. is it. Yeah. So now that Animesh, now that we are considering Sarfaraz certainty in the playing 11, at least for the next two matches, including this match and the Mumbai Test match against New Zealand, do you think it's right to either send KL Rahul back home just for him to get a break, or to send him back to Ranji Trophy? That go on, play some matches, play some domestic cricket, just come out of your shell, get some runs under your belt, and come back in the BJT with a better form, with a better mindset. What is the ideal thing that you would do, Animesh? Either keeping him in the dressing room, send him home for a mental break, or a break just to stay away from cricket, or send him back to the Ranji Trophy? देखिए, बिल्कुल जो बात कहीं जहाँ से शुरू हुई गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम केएल राहुल को बैक करेंगे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिस चीज़ को एड्रेस किया वो था सोशल मीडिया। लेकिन जिस बात को आप एड्रेस कर रहे हो, इसका मतलब वो कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करती है, और आप जो केएल राहुल को बाहर करने की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको ब्रेक देते हैं, लेकिन वो ब्रेक फैन्स उसको ब्रेक की तरह नहीं लेंगे। फैन्स उसको इस तरह से लेंगे कि आपकी खराब फॉर्म थी, आपको टीम से बाहर कर दिया गया। अभी आप सिर्फ प्लेइंग 11 से बाहर गए, उसके बाद आपको कहीं न कहीं कह सकते हैं स्क्वाड से बाहर करने के बाद वो एक तरीके का क्रिएट हो जाएगा, पूरी तरह चारों तरफ एक मैसेज क्रिएट हो जाएगा कि केएल राहुल ड्रॉप हो चुके हैं। तो वो कहीं न Hmm. कहीं उनको मेंटली ज़्यादा कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। उनका कॉन्फिडेंस पहले से ही बहुत लो है, और वो कहीं कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लो हो जाएगा, तो उनको कमबैक करने में भी दिक्कत होगी। बिल्कुल, वो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, जिस तरह से उन्होंने पहले परफ़ॉर्म किया है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं न कहीं उनका रोल और काफ़ी अहम हो जाएगा अब आने वाली सीरीज़ में। तो 15 मैन स्क्वाड में मुझे लगता है उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेयर अभी टीम इंडिया के पास नहीं है। हैं भी, लेकिन बहुत सारे फ़ॉर्म में प्लेयर हैं, लेकिन जब ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया टूर की बात होती है, तो कहीं न कहीं केएल राहुल एक ऐप्ट चॉइस बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि टीम से ड्रॉप करना एक सही डिसीज़न नहीं होगा, और जो उनके लिए क्या है, मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहिए, और आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर आप फॉर्म में नहीं हैं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, और अगर कहीं न कहीं आगे चल के डिसीजन लिया जाता है कि उनको स्क्वाड से भी ड्रॉप कर देते हैं, तो बिल्कुल सही होगा मेरे हिसाब से। अगर उनको घरेलू मैचेस में, या कह सकते हैं रणजी ट्रॉफी है, वहाँ पर वो कहीं न कहीं मेहनत करें और अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश करें, क्योंकि टीम में लगातार बने रहने से फॉर्म में वापसी तो नहीं होगी, जो मेरा मानना है। और ये आपके Yeah. लिए प्रैक्टिस मैचेस नहीं हो सकते कि आप अपनी फॉर्म को वापस पाने की कोशिश करें।
और अभी Yeah. केएल राहुल प्राइम कह सकते हैं कि प्राइम टारगेट बन चुके हैं, क्योंकि आपका रोहित शर्मा का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, और इसके अलावा विराट कोहली का भी फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से वो आउट हुआ है, उससे पहले भी जिस तरीके की फॉर्म चल रही थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल है टीम इंडिया के साथ। तो वहां पर एक प्लेयर को आपने बैठा के थोड़ा सा तो ईज आउट कर दिया है टीम को, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे हार्श डिसीजन लेने होंगे, और मेरे हिसाब से ये हार्श डिसीजन नहीं था, और टीम इंडिया को इसका फायदा आगे चलकर मिलेगा। Yes, yes, we'll have to wait and see क्योंकि डिसीजन राइट था। वो बहुत फैंस सोशल मीडिया पे एग्री कर रहे हैं कि इट्स हाई टाइम you have a Sarfaraz Khan in your 11 rather than a KL Rahul. But Preet, your thoughts on this actually? What would you want to see KL Rahul being with the squad in Pune and in Mumbai, or staying away from cricket for a month till BJT, or go and play Ranji Trophy, get out of his shell and get some runs under a belt? Well, technically speaking, Karnataka, the state side that Rahul plays for, they have a match scheduled on October 26th against Bihar. So he's definitely not going to play there. It's 26th day after tomorrow. अगर छोड़ना होता तो he would have been asked to leave the squad right away. And that is against Bihar also. Nothing, no disrespect to that team, but again, playing against Bihar and scoring runs, I don't see how that would help KL Rahul. And the next game is November 6th, I think, against MP. So by that time, it Test series ही खत्म हो जाएगा. So that question of him going back and playing Ranji Trophy doesn't make sense in the middle of it. हाँ, BGT से पहले अगर 2-3 है नवंबर 6 का गेम खेल सकते हैं. I think most of these guys who are not most of these guys would go back to play Ranji is what my guess is, and KL Rahul should do that. He should be part of that number 6 game if he is not part of the ODIs or the South Africa ODIs, which I think he might be part of. Then again, it's a choice that they could make. Could very well be a possibility कि आप उसको जो भी South Africa का white ball series है, I think not T20Is है, not ODIs, right? तो उसके बीच में अगर आप कहते हैं KL राहुल को यार go and play a bit of Ranji, that would be a great idea, fantastic idea, rather than him being there part of the T20A squad. So yeah, there is merit to that logic where you ask KL Rahul to go back and try to get some form back. Definitely option है BGT से पहले, that is. But beyond that, as Thaus mentioned, yeah, definitely. I mean, as part of, you look at it as a part of the 15-member squad. उस 15 में से 11 में जो आ रहा है, जो नहीं खेल पा रहा है, it's not a shade on that player that they are not picked in that 11. You're very well part of the squad, and situations demand certain players. As I said, Sarfaraz Khan के साथ पूरा momentum था. Thaus very well mentioned that if you're scoring runs when where no one else is scoring, that adds more weight to that knock. And I think Sarfaraz Khan got the advantage of that. अगर सभी लोग रन मार रहे होते, then you would have thought कि यार सभी रन मार रहे थे, यहाँ पे सिर्फ सरफराज ने और ऋषभ पंत ने रन मारे, तो that is there, of course. KL Rahul, look, as I mentioned, and I've always been of the opinion he is more value to you in overseas than at home. Maybe at home में आप स्क्वाड में ना पिक करें. आई अगेन पार्शली एग्री विद अनिमेश हियर कि आप एट होम में अगर देख रहे हैं, यू मे नॉट want, or you may not need a KL Rahul in the 15 itself, but when it comes to overseas conditions, you probably want him there in your 11 as well. So that is a thought process that the Indian team management has with when it comes to KL Rahul. And BGT will definitely, I don't see Sarfaraz Khan playing that first test of the BGT. It is definitely going to be KL Rahul, even if Sarfaraz scores tons of runs in the test in India, he'll still have to wait his time, because KL Rahul has that what you call the amount of runs that he has scored overseas, so that definitely will be there. But then again, I do agree to your point that there is enough time for him or the management to ask him go back, play a game of Ranji, get your batting sorted, get some runs under your belt, get some that confidence, because we need that confidence heading into BGT. Yeah, I have a yeah, point here. Yeah. yeah. Yeah, again, see, when you have runs against whoever the team is, I mean, whether it's Bihar, whether it's MP, if you go and play matches, get runs, that gives you a lot of confidence. Then it doesn't matter who comes later in the stage. But then for KL Rahul, runs matter to him right now, whatever the situation or whatever the team is. If he gets those runs, he will get some kind of confidence before going to Australia. I mean, otherwise, if he keeps on
avoiding if he keeps on batting in the nets, जहाँ पर results नहीं आ रहे कि यार runs आए या नहीं आए, mentally वो नहीं हो रहा यार, if he's not ready to accept that I'm not part of the playing 11 and they're not considering me, then it starts affecting a player, I believe. So why not release him now, get some runs? Bihar is a good team to start with. At least, I mean, you may not get the challenge what Australia may offer, or maybe an MP, or maybe even a Mumbai may offer, but at least some good runs here will give him many folds of confidence, right? Followed by MP. Yeah. So that is where don't take him to South Africa, because BGT is right now important for Team India. 5-match test series. I agree with Vineet that even if this Sarfraz Khan scores 100 or even maybe a double 100, we will not have the confidence of him playing in Australia, because we don't know how he reacts to those balls, especially after that. Yes, the delivery, I still remember the way he got out, that surprising delivery. So that keeps in the mind, that's in subconscious mind. So that is very important. That's why I want KL Rahul to Yeah. go out there, Yeah. enjoy, get those runs. बाकी तो अपने आप से flow में आ जाएगा. It's all about getting into the flow, and Bihar is the best team to start to get into the flow right now. Absolutely. This KL Rahul debate can go on for a very long time. What needs to be done, especially right before the BJT? How does he approach his comeback into the Test 11 in the BJT? Will he get a chance? Because as of now, to Sarfraz Khan को नहीं consider किया जा रहा, as we have been discussing for the BJT 11. But you never know. Well, we move on to the next talking point. Now we have a lot to talk about India's bowling combination. Animesh, uh, Sundar अंदर आए, उन्होंने performance दी, 7 wickets, an incredible performance. But are you happy with the fact that he came in place of Kuldeep Yadav instead of a seamer? You could have we discussed few days back that we can play one seamer and then four spinners along with it. Are you happy with this combination and the fact that Kuldeep Yadav sits out and Washington Sundar plays in his place? ये बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आप खेल तो इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपका पूरा टारगेट या पूरा फोकस बीजीटी पे है. देखिए, हम जब भी इंडिया न्यूजीलैंड खुद हम जब सेशन कर रहे हैं वहाँ पर मैक्सिमम बातें बीजीटी की होती हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है. कहीं ना कहीं उसको ही ध्यान में रखते हुए ये 2 सीमर खेलने का जो डिसीजन है, मुझे लगता है वो वही रहेगा. और वहाँ से ही आया है कि आपको सीमर्स की भी ज़रूरत होगी, और उनकी फॉर्म को चेक करने के लिए आपको ट्रायल देना पड़ेगा, और वो ट्रायल देने के लिए आकाशदीप को टीम में वापस लाया गया है. सिराज से वो मदद नहीं मिल रही है. और देखिए, जो हम केएल राहुल को और सरफराज का कंपैरिजन जहां पर कर रहे थे, उनसे जो हम चीजें देखते हुए हैं, और केएल राहुल ओवरसीज परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन आकाशदीप और सिराज में से सिराज से भी कुछ परफॉर्मेंस जरूर मिली है, लेकिन उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यू ओवरसीज उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है. और जिस तरह की खराब फॉर्म से वो लंबे समय से गुजर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक बड़ा हेडेक है. तो इस कारण कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आकाशदीप को मौका दिया गया. और देखिए, पिच में आज सीमर्स के लिए कुछ खास नहीं था, तो अगर Yeah. विकेट भी मिला, लेकिन एक मौका मिलता है उनको अपनी फिटनेस बनाए रखने का, और जिस तरह से गेम टाइम उनको मिलेगा, और एक इंटरनेशनल गेम का एक्सपीरियंस काउंट होता है हर तरीके से. तो मुझे लगता है वो आकाशदीप के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शमी का फिट होना ना होना अभी भी क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हुआ है, और सिराज का फॉर्म नहीं है, और आकाशदीप के अलावा आपने किसी बॉलर को उतना गेम टाइम दिया नहीं. तो यश दयाल आपकी टीम में Yeah. आए, बाहर चले गए, उसके बाद और भी आप पेसर्स लेके आते रहते हैं बीच बीच में. मुकेश कुमार को लेके आए थे, मुकेश कुमार के साथ आपने स्टिक नहीं किया, आपने फिर उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया. आपकी वो T20 आई की भी टीम का हिस्सा बन गए. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टीम इंडिया को थोड़ी सी कह सकते हैं परेशानी में उसने डाल दिया है. और अभी जो कहीं ना कहीं उद्धारक होंगे या इस सिचुएशन से निकालने वाला जो मसीहा बन सकता है, वो आकाशदीप ही हो सकते हैं. और मेरे हिसाब से इसलिए कहीं ना कहीं वो ऑप्शन के साथ गए. और कुलदीप ठीक है, कुलदीप का स्पिन का जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरीके से उनकी कह सकते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है या उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, उनसे हम सभी वाकिफ हैं. और मुझे लगता है कि बीजीटी पे में भी हमें एक लंबे बैटिंग स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, और वो हम चीज़ें कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं. हम अपने पेस अटैक में भी ढूंढ रहे हैं कि हमको एक पेस ऑलराउंडर मिल जाए, जिसके लिए आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कहीं ना कहीं नीतीश रेड्डी भी कंटेंशन में है, और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर भी कंटेंशन में, लेकिन Yeah. वो पेस ऑलराउंडर टीम इंडिया खोज पाती नहीं है. तो मुझे लगता है इसको लेकर गौतम गंभीर ने भी बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके बारे में ना सोचकर जो चीज़ हमारे पास है, हमें शायद उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए.
और ये चीज कहीं ना कहीं अब मैटर करती है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जैसा बल्लेबाज अगर आपके लिए अच्छा कर सकता है, वो कर भी चुके हैं, वो आपके लिए पहले भी ओवरसीज टूर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा चुके हैं। और जो जिस तरह की Yeah, बैटिंग डेप्थ वो देते हैं, वो टीम इंडिया को मिलना मुश्किल हो जाती है। और वो एक yeah, तरीके से थोड़ा सा देखिए, जो दिक्कत एक पेस ऑलराउंडर आप नीतीश रेड्डी को भी लेके आएंगे, बहुत पेस उनके पास yeah, भी नहीं है। शार्दुल ठाकुर के जिस तरीके से रणजी में परफॉर्मेंस आया है, वो ना तो बैटिंग से कमाल कर पाएंगे आपके लिए उतना, ना बॉल से भी, तो फिर मुझे नहीं लगता उनको लाना कोई समझदारी भरा डिसीजन होगा। इसके कंपैरिजन yeah, में आप अगर yeah, वॉशिंगटन सुंदर के साथ लंबे समय तक स्टिक भी करते रहते हैं, तो आपको एक हल्का सा एक ऑलराउंडर जो कह सकते हैं आपके लिए तेज गेंद भी डाल सकता है, भले वो स्पिन ऑलराउंडर भी है, लेकिन आपको yeah, मदद मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाना, उनको ट्रायल पीरियड में लेके आना, उनको गेम टाइम देना एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और ये आपके लिए काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको बैक नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फ्यूचर को देखते हुए डिसीजन अपने बना रहे yeah, हैं, और टीम में कहीं ना कहीं ट्रायल और एरर का तो ऑप्शन रहता ही है, और मेरे हिसाब से इसको लेकर जाना चाहिए। आप एक ही प्लेइंग 11 के साथ मेरे हिसाब से स्टिक करते रहते हैं। और जो मैंने विनीत से पहले भी कहा था, अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि गेम में आपके लिए कौन सा प्लेइंग 11 में सबसे सुटेबल प्लेयर है, आप उसके साथ जाइए। आपके लिए कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उस चीज को बिल्कुल गौर से देखिए, और कौन आपके लिए होम गेम में परफॉर्म करेगा, कौन ओवरसीज में परफॉर्म करेगा, ये सारी yeah. चीजें ध्यान में आपके रहनी चाहिए। बिल्कुल, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज बोलते हैं कि जिस पिच पे, जिस कंडीशन पे जो प्लेयर सूटेबल है आप उसको खिलाइए। और आप जैसे कि निमेश ने कहा कि आपको फ्यूचर भी बिल्ड करना है। वॉशिंगटन सुंदर, अब ये भी नहीं कह सकते यंगस्टर है, 3 साल पहले बॉर्डर गवास्कर में जो उन्होंने किया था, इन एक्सपीरियंस काफी है क्योंकि टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ओवरसीज जाके, जैसे कि निमेश ने कहा। बट बिफोर वी कम टू द लास्ट टॉकिंग पॉइंट विच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, ताउस आपसे पूछेंगे इंडियन बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में, योर थॉट्स on the current bowling competition. Do you think this is ideal? Talking about the India versus New Zealand series, let's not talk about border Gavaskar या वहाँ पे क्या होगा अभी के हिसाब से. Do you think this is the ideal combination, or would you have gone for one seamer and four spinners? एग्जैक्टली व्हाट संजय मांजरेकर फील्स, कॉमन सेंस। ये भी मैंने ट्वीट किया था, बाद में मैंने ये देखा था कि यार संजय मांजरेकर ने भी कॉमन सेंस का भाग डाला है। दिस इज व्हाट आई ट्वीटेड ऑन ट्विटर कि कॉमन सेंस, इट्स कॉमन सेंस एंड लॉजिक, right? To Yeah, have Akashdeep over Mohammad Siraj. I mean, it's not rocket science that somebody who's not informed, somebody who's spraying the ball all around the park, all around the wicket, he doesn't deserve to be there, unfortunately. I mean, he's very talented, right, Mohammad Siraj, but not on these wickets. Maybe he's struggling with form, maybe just like low on confidence, like KL Rahul. So why not get Akashdeep, who was also, I mean, he bowled a beautiful line. I mean, the way he was, the variation in pitching the ball, length, है, कभी short, कभी full डालते हुए. So he's got, I mean, naturally he's gifted. Like how this guy is gifted in getting the ball in suddenly from nowhere, Mohammad Siraj, वैसे ही आकाशदीप भी gifted है in a way that he's got a natural good discipline line. So why not when you need a support in favor of Bumrah? Bumrah is a bowler who can get you wickets, but he also needs support. Yeah, right. He needs support. He needs kind of he hunt fast bowlers hunt in pair. तो अगर आपको वो पैर, वो सपोर्ट, वो बैकअप नहीं मिलेगा तो बुमराह विल आल्सो बी क्लूलेस, helpless, I would say, not clueless, helpless. He may find a solution for any situation, but you need help from the other end. एक एंड से थोड़ी बॉलिंग डालते रहते पूरे टाइम. Yeah, that is one good decision, logical, common sense. That should have been done some time back, but that's okay. Siraj got his chances. He may get in Australia as well, but वी ऑल नो व्हाट वॉशिंगटन सुंदर did. So इससे आगे क्या बात करना कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि yeah, कुलदीप या मे बी दीज गाइज might have thought कि यार being a bit more New Zealand were more comfortable in sweeping Kuldeep Yadav because he was slower in the air. The ball was yeah, turning, the chances of leg before or maybe getting bowled was lesser compared to Washington Sundar on a turning track because he doesn't turn the ball much, which is kind of a worry for a batter. क्योंकि या तो सडनली ऐसे विकेट पे जहां पर बॉल टर्न हो रही है और बॉल अगर टर्न नहीं होती है देन इट्स वरी, राइट? तो कुलदीप तो प्रेडिक्टेबल है कि यार वो टर्न ही करेंगे क्योंकि उनको पता है वो या तो यहाँ करेंगे गुगली या तो चाइना में डाल के बाहर करेंगे. So there is no middle way. So middle, most of the wickets you might have seen he's got bowled and leg before because he's kept on the stumps. The ball hasn't turned much like how it usually it turns for maybe an Ashwin
or maybe a Kuldeep Yadav. That's what worked for Washington Sundar. I think it's a good combination here, good combination of fast bowlers. But yeah, 259 is a quite a challenging total, man, on this wicket. I hope it doesn't Yeah, backfire. it's Kyunki 259, I hope yeah. these guys back longer, यार, because they also have good bowlers, right? उनके पास भी spinners है. उनको भी पता है एजाज पटेल ने 10 विकेट निकाली है पांच Yeah, खेड़े पे. yeah. So well to bat longer you need a good base, but विनीत इंडियन टीम के बेस का जो एक पिलर है वो बहुत टाइम से लड़खड़ा रहा है. रोहित शर्मा फॉर्म, जैसे कि हमने टॉकिंग पॉइंट्स में लिखा है, रोहित शर्मा फॉर्म, इज इट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन टीम, or is it too early to be concerned about Rohit's form? What is your thoughts on the way he's getting out? Yeah, Kanav, when we discussed about this before we started the show, कि थोड़ा ऐसा लग रहा था कि form is a big issue for somebody like a Rohit Sharma. And I was just going back and looking at the stats, and of course, in the past, I think 10 Test innings, he has had scores of under 10, 4, 5 times. 4 times, sorry. So yeah, there's a big worry there, but also in among those 10 Test innings, there are 2 centuries also. One in Rajkot versus England, and against England and Ranchi. So I wouldn't say it's that kind of a big form, but as you mentioned, I think the key point is the last bit that you mentioned, the way that he is getting out. We also had this discussion about that Tim Southey delivery, that how he played all around it. The angle of the bat that was coming in was completely wrong. It was a bit straighter. He could have easily, defended that delivery, but he just played all around that delivery, which wasn't a peach kind of a delivery, but it was still a very decent delivery. But somebody of his caliber should have been able to defend it. So that is more of a worry more than the lack of runs, so to speak. But then again, I think the top order for India, it's never been the case where they have all clicked together as a team. But the good thing is that someone or the other has stepped up. Even if Rohit Sharma has failed or Virat Kohli has failed, somebody else has stepped up. I think as a whole that matters. But of course, Rohit Sharma personally would want to get some runs under his belt. He has been playing that aggressive cricket for a fair long time. Maybe he may have to dial that down and try to spend more time on the pitch. And once he gets his eye in, it's a treat to watch. I think that is not we are not able to see that very often these days. I think that is probably why we are talking about the concern in form and etc. But of course, if you are somebody of Rohit Sharma's caliber and you have not had 50 plus score in your 4 innings or 5 innings, that might seem to be a bit of worry. But he's the captain, of course, right? So at least you give him that kind of a leeway there. Yeah, absolutely, he gets that leeway, but then again, his form is really crucial, especially going into BJT. But as Animesh, do you think for you personally is it a concern? Because as we said, as we discussed, that it's the way he's getting out today. Also, it was a good delivery, but it wasn't an unplayable delivery that someone of Rohit's caliber should have gotten out on. What is your thoughts on the way Rohit has been batting in the red ball cricket for quite some time now? देखिए, दिक्कत की बात तो है, परेशानी बनी हुई है लगातार, वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप केएल राहुल के बारे में बात नहीं कर रहे कि उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, प्लेइंग 11 से रेस्ट दिया जा सकता है, या 15 मैन से स्क्वाड निकाल कर रणजी में भेजा जा सकता है। और जो हम विराट कोहली के बारे में लेकर बात करते हैं कि इस परेशानी का हल सिर्फ विराट कोहली के पास है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, और वही चीज़ रोहित शर्मा पे भी अप्लाई होती है कि अगर वो अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे तो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी रोहित शर्मा के ही पास है कि उनको कोई बैटिंग एक्सपर्ट आके ये नहीं बता सकता कि भाई आप ये चेंज कीजिए या वो चेंज कीजिए तो आपकी बैटिंग में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं खराब दिन है और वो दिन बदल सकते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब ओवरसीज की बात आती है तब रोहित शर्मा अपने प्राइम में दिखने लगते हैं, जैसे भी कहीं भी उनकी कितनी भी खराब फॉर्म हो, और वो जब ओवरसीज टूर्स पे होते हैं तो वो फॉर्म उनकी वापस आ जाती है। और मैं इसी होप के साथ अभी भी स्टिक करना चाहूँगा कि बीजीटी में जाते ही कहीं ना कहीं उनका वो फॉर्म वापस आए, और उससे पहले अभी आपके पास 3 इनिंग्स और 4 इनिंग्स बची हुई हैं, इस मैच की 2 इनिंग्स और अगले मैच में 2 इनिंग्स, वहाँ पर कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश होगी। पहली इनिंग तो बेकार चली गई, वेस्ट हुआ एक तरीके से, और जिस तरीके से आउट हुए वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल कह सकते हैं बाइसनेस उनके अंदर चल रही है कि वो अपने गेम में उतनी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे, और वो क्लैरिटी ना पाने की वजह से आपको ये ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है कि Yeah. वो जिस तरीके से आज बोल्ड हुए सऊदी के खिलाफ। तो
क्योंकि वो इतनी भी बेहतरीन बॉल गेंद नहीं थी जिसपे आप रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन आपको आउट होता हुआ दिखे और इस तरीके से बोल्ड होता हुआ दिखे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल ड्रॉबैक चल रहा है और उसको लेकर वो क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं और वही क्लैरिटी उनकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो उसको लेकर ही काम करना होगा। मुझे लगता है कि अब जो दौर है क्रिकेट का, वहां पर कहीं ना कहीं मेंटल बैकड्रॉप ज्यादा होता है, खासकर बैटर्स के साथ, और वो कहीं ना कहीं उनको कोप अप भी उसी से करना होता है। और रोहित शर्मा इस चीज में माहिर खिलाड़ी हैं, पहले भी कोप अप करते हुए आए हैं और इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। Yeah, absolutely. He's a great batter across formats, and he knows how to make a comeback of sorts. So, if you want to add something, you can. Then we'll quickly wrap up this live. And but I have one more question before we end this live for all three of you. But yes, please, your take on Rohit. Before getting into this, I want to ask you, Kanaf, if India needs a draw, will you bet on Rohit Sharma? If India needs a draw, I mean, you mean to bat out 2 days or Bat out, two and a bat half out, days? bat out. No, not 2 days. No, That tells I you the don't see answer. him batting Test for two cricket days. is something. But Yeah, it's Test cricket is rarely. It's something. rare. I think There's you won't be only able to bet on anybody to bat 2 days now. anybody. Yeah, there's 1.5 not days even a at least. single batter. 1.5 No, days. only One and I a half think days. There is I no don't see. I Pujara. don't There see is anyone. see what Then Viren Pujara Sehwag, the confirm, way Pujara's Viren return Sehwag, will be confirmed na. the way Viren Sehwag used to bat that one-dimensional approach, he was comfortable because he had the Dravids, the Tendulkars, and the Lakshmans and the Gangulis below the order. Here you have all youngsters, right? Here you have Virat Kohli out of form. Here Shubman Gill performed only in the second innings, right? Here you don't know what's happening with KL Rahul. Sarfraz Khan is a newbie. So ab Jaiswal, too much pressure. You're going to put too much pressure on Jaiswal if this continues to happen, whether in India, whether outside India. So what will you do? I mean, there is hardly any time to change the approach. So you can't have that one-dimensional approach. You have to have that strong mental, strong defense, mentally strong, where you need to have that approach, that attitude to bat it out through the day. I mean, आज at least you should have stayed not out. राइट अगर आप खेल रहे होते स्कूल क्रिकेट में योर कोच वुड हैव होल्ड योर इयर्स एंड पुल यू डाउन एंड सेड क्या बैट से मारा होता सो दैट्स व्हाट हैपेंस दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज रोहित शर्मा इज ही गिव्स अवे हिज विकेट्स इजीली आई मीन वो प्राइस ही नहीं रखता है विकेट पे जो मे बी रोहित मे बी सरफराज खान रखता है it's not easy to get Sarfraz Khan out but this guy has a range of shots but that doesn't mean you have I mean you can't have a strong defense. So you have to be very, very compact. You're an opening batsman. Sehwag was played with full phase of the bat. He never played loose shots like how sometimes Rohit Sharma plays casually. Sehwag was not casual. He took on the attack, but he also had a strong defense. He hardly had any gaps between bat and pad. Yeah, edge out. हो जाता था, yeah. So Rohit Sharma needs to push his game harder. He has to realize कि यार he's a captain. वहां पर उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी विकेट पे ज्यादा देर ठहरना पड़ेगा एक अप्रोच लेके मैं इंटेंट के साथ जाऊंगा मैं मारूंगा खत्म करूंगा मैच या तो इस पार या तो उस पार दैट्स नॉट हाउ टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड राइट आई मीन या दैट इज द अप्रोच कि यार जीतेंगे या तो जीतेंगे रवि शास्त्री स्टाइल कि यार जीतना ही है मैच दैट इज अ गुड अप्रोच बट देर आर it also backfires, right? There are chances that New Zealand will come back, bounce back. If you get out early, there will be a chances that there will be a major collapse in the lineup because of you getting out cheaply. It might start affecting others. So you have to take a certain kind of responsibility. You have to lead by example, right? And it's been not nothing new. I mean, it's been happening for quite some time. यार एक अच्छा बड़ा नॉक आता है एक मैच विनिंग नॉक आता है उसके बाद प्लेन उसके बाद single digits, double digits, the way he gets out, loose shots. That's not how an top class batsman, a captain plays, right? So somewhere he has to draw the line, somewhere he has to curb his instincts, somewhere he has to take up the responsibility. Otherwise, we all know what kind of a batsman he is. He can destroy any bowler in the world. But cricket give respect to the opposition as well as cricket as well. Yeah, absolutely. I mean, you are a great batter. You know how to give good starts to your team. But then again, there are times when you need to just hold your ground and stand there. But I don't think the way Rohit has been getting dismissed, वो कोई मारते हुए नहीं हो रहे हैं. But उनके डिफेंस में ही वो एक लूप होल आता है, एक ऐसी वीकनेस आती है कि वो डिफेंस में ही
आज भी जिस तरीके से खेले, he was not वही तो going for a डिफरेंस six ही or है a ना। boundary. Defense is not that strong. Rohit's defense is not that strong, and that is something he can work upon and he needs to work upon. But then again, I don't see any other batter also in the lineup who can bat for 2 days. So this is a big concern going into the BJT. But then again, we'll talk about the BJT when the right time comes. Before we end this live, I have a question for all three of you. New Zealand 259, India 16 for 1. Who is ahead and what do you see happening on day 2? Animesh, I'll start with you. मुझे लगता है अच्छे नॉक्स आएंगे और प्लेयर्स कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यशस्वी से अच्छा नॉक आ सकता है। और इस इनिंग में फर्स्ट इनिंग की बात करें तो सरफराज जिस तरीके के फॉर्म में अपना मोमेंटम ब्रेक करना चाहेंगे। ऋषभ पंत, सबसे अच्छी खबर इस पूरे मैच की मेरे लिए तो यही रही कि ऋषभ पंत कोई चोट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो टीम में दिखे, विकेट कीपिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो इन्हीं 3 प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद रहेगी मुझे। और विराट कोहली ने जिस तरीके से 70 की नॉक खेली थी, तो मुझे लगता है कि इस पूरी इनिंग में फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया लीड ले सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए उससे थोड़ी सीख लेंगे, क्योंकि जल्दी पहले दिन का गेम खत्म हो गया टीम इंडिया के लिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिल गया, नए दिन पे अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी नहीं है न्यूजीलैंड की कि वहां पर टीम इंडिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कह सकते हैं मौका है टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए अपने आप को जिन चीजों से वो गुजर रहे हैं उनसे बाहर आने का। Yeah. Vineet, your take on what can happen tomorrow, and do you think India is ahead in this match as of now? के पहली इनिंग की decent total lead वो ले सकते हैं न्यूजीलैंड से? Yeah, it's too early to say whether India is in the position or they are ahead in this match, because what, only 11 overs India have batted and they have already lost Rohit Sharma. But yeah, I do agree with Animesh certainly there. This batting unit is better equipped to play the New Zealand spinners, because they are not really at par with what Indian spinners were able to do. So I definitely see India get going past New Zealand's first inning score and taking a reasonably good lead. I think I'll say by the end of day two, India should have the lead of near about, I don't know, 100, 150 is what my thinking is. Gill is coming back after stiff neck injury, and I can see him, the way that he batted, he looked really assured and he looked like somebody who wanted to bat long. And Yashasvi Jaiswal also some good deliveries, but he has, he's played out the seamers, played out the seamers really well. They had a spin coming in as well, and he's somebody in this kind of pitches will definitely try to take on the spinners early. And if that happens tomorrow morning early, you could expect big runs from Yashasvi Jaiswal as well, and Gill just playing his time out. And you also have the informed Sarfaraz and Rishabh Pant, who know these conditions or these pitches really well. They know how the pitch would behave, so they'll try to attack and attack and attack the spinners. And it's going to be spinners bowling the majority of the overs tomorrow as well. So I see India, gaining the advantage on day two. Hopefully for the Indian fans, they are also believing the same thing for India on day 2. Without your thoughts, 243 की trail है India की. They need to at least score 243 to reach New Zealand score, and on top of that, Vineet believes 120 odd more can be added by the end of day 2. What do you think? Is that possible? And do you think India, we might see a century or two from the Indian 11 tomorrow? I wish through. I wish so. I wish Rohit Sharma remained, and because he could have changed the game. Yeah, he could have changed the game. Now it's difficult because they have good bowlers. They have good seamers. Look at Tim Southee. He's got all the experience of the world. Look at the left arm spinners. It's not going to be easy, too easy, especially on this kind of a wicket where the wicket is very unpredictable. Not on the bounce, but definitely turn well. Sometimes the ball turns, sometimes it remains straight. So the batters will keep guessing. So here, how mentally stronger are you will matter right now. So I believe it's Yashasvi who matters. Shubman won't will have to up his game in this match. Virat, I don't know. Virat is some, and I have hope from your Pant and Sarfraz. That's it. And rest, I don't know. It's 50-50. I can't say right now. Very difficult to
The kind of The bowling kind that of they have, they are utilizing. Sundar has had, you never know, he scores a brilliant half century or even a century in the first innings. But yes, as of now, India 16 for the loss of 1 wicket, and they trail by 243 runs. We'll have to wait and see what happens tomorrow. A great and incredible performance by Washington Sundar today, and hopefully the Indian team follows that with a great performance with the bat in the first innings. Thank you so much, South, Vineet, and Animation. Thank you so much to all our viewers for connecting with us. We'll see you tomorrow, hopefully with the better news, with a good day for all the Indian fans and the Indian team. And then we'll discuss whatever happens on the field tomorrow. Until then, do subscribe to the Cricket Next YouTube channel, hit the bell icon, follow us across all our social media platforms, and do take care of yourself. Good night.